Okay, we are live streaming now. So I'll just give me 1 minute. Please, everyone, mute yourself. Yes, Atul bhai, please begin. રેવા લોજ વડોદરા, રોહિત લોજ અમદાવાદ અને જ્યોતિ લોજ મુંબઈના ઉપક્રમે આયોજિત ત્રિવેણી મંગળવાર મીટિંગના પ્રોગ્રામના આજના 7મા ફેડરેશન 3 ફેડરેશન કે જેમાં મલયાલમ, ગુજરાત અને મુંબઈના આધ્યાત્મિક પરિસ્થિતિનું વિજ્ઞાનના વક્તા શ્રી દિનાકરણજી, ડોક્ટર બીનાજી અને ડોક્ટર મંજુષા યાદવજી વાનખેડેજી અને મોડરેટર શ્રી તરલ કુમાર મુનશી જી તેમજ આજની સભામાં હાજર સૌ સભ્યોનું સ્વાગત કરું છું. પ્રવચનની શરૂઆત કેશવરબેન આપણને વૈશ્વિક પ્રાર્થનાથી કરાવશે. કેશવરબેન. O hidden life, vibrant in every atom. Oh, hidden light, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. Oh, hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. Oh, hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. know he is also one with every other. Shanti, Shanti, Shanti. સભાની આગળની કાર્યવાહી માટે શ્રી તરલભાઈને આમંત્રિત કરું છું. તરલભાઈ, આપનું સ્વાગત. जी, थैंक यू. सभी का स्वागत है. दिनाकरण जी, मंजुषा जी और बीना जी, आप तीनों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस मीटिंग में पधारे. आज का विषय दिनाकरण जी ने जैसा चुना है, स्पिरिचुअल इकोलॉजी, और हिंदी में कहेंगे कि आध्यात्मिक परिस्थिति का विज्ञान. तो मैं सबसे पहले दिनाकरण जी को ही आमंत्रित करूंगा कि वे आकर इंग्लिश में बोलें. उसके बाद चूंकि मंजुषा जी और बीना जी पहली बार शायद त्रिवेणी में आ रही हैं, तो मैं बता दूं 18 मिनट दिनाकरण जी पार्ट 1 बोलेंगे. उसके बाद 9 मिनट बीना जी मलयालम ट्रांसलेशन, सॉरी हाँ बराबर मलयालम ट्रांसलेशन करेंगी, और फिर मंजुषा जी उसको हिंदी में 9 मिनट करेंगी, और क्रमानुसार वापस पार्ट 2 में भी उसी तरह से. बहुत बहुत धन्यवाद. दिनाकरण जी के बारे में सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि वो बहुत ही एक्टिव हैं, और थियोसॉफी में वो लाइब्रेरी, मैं सोचता हूँ जैसे उन्होंने आज स्पिरिचुअल इकोलॉजी के बारे में बोला है, वे निरंतर बुक्स की इकोलॉजी के बारे में भी सबको अवेयर करते रहते हैं. उनके पास एक लाइब्रेरी है और लगातार पुस्तकें भेजना ये करने में वो बिजी रहते हैं. 1983 में उन्होंने अडियार लॉज से अपना यात्रा शुरू की, लेकिन वो सेकंड जनरेशन थियोसॉफिस्ट भी हैं. परिवार में सदस्य, उनके जो पूर्व सदस्य थे वो भी इसे थे. केरला फेडरेशन सेक्रेटरी रहे 89-92 के बीच में, 2010 से 2013, और उसके बाद 2016 से आगे हुए. उन्होंने बहुत सारे नेशनल लेक्चर दिए हैं इंडियन सेक्शन की ओर से. केरला साहित्य एकेडमी ने उनकी एक किताब पब्लिश की है जिसका नाम इस तरह से है कि ब्रह्म विद्या संगमम केरला नवोदानवम. इसका मतलब ये होता है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी एंड रेनेसेंस ऑफ केरला, या थियोसॉफिकल सोसाइटी और केरला का पूर्ण जागरण. उन्होंने राधा बर्नियर की भी टॉक्स को कंपाइल किया है, लिसन टू द सॉन्ग ऑफ लाइफ के नाम से. उन्होंने सुरेंद्र नारायण की टॉक्स को भी कंपाइल किया है, लीव योर वर्ल्ड एंड कम इनटू अवर्स, ट्रांसलेटेड थियोसॉफिक लाइफ बाय एनी बेसेंट, और बहुत सारे आर्टिकल्स उन्होंने थियोसॉफिस्ट और जर्नल्स में दिए हैं. तो बहुमुखी प्रतिभा के धनी दिनाकरण जी, वेलकम, और अपना विषय शुरू कीजिए. धन्यवाद. Good evening, everybody. Am I audible? Yes, sir. Loud and clear.
Okay, thank you very much for your kind words. And I'm more thankful to all of you for inviting me to address you on this nice evening. Other day, all over the world, we were celebrating World Environment Day. And you might have participated in many functions also, planting trees, cleaning the environment from plastic bottles, plastic things, waste products, etc., etc. But in those meetings or in those programs, they were talking about we and the environment. But when the question of spiritual ecology comes, we say we are the environment. Our former president, Radha Bernier, used to say, the peculiar condition of the human mind makes it think that the environment is different from the individual. The environment is outside and the me is inside. Actually, we are breathing the same air, which plants are taking, animals, everybody is taking the same air. We are sharing the same water. Our lungs are filled with the air in the atmosphere. The water we consume, about major portion of our body is water. And all these things disintegrates finally. And we go to the soil. Then whatever is outside is inside us, including the emotions and our thoughts. These are all important when we consider the question of spiritual ecology. In many developed countries, they are talking about carbon emissions, reducing the pollution, etc., etc. Their aim is, it is for the human point of view. If you reduce the air pollution, we can live more comfortably in this earth. If you plant more trees, it may bring rain. In such a way they are teaching. But actually, this environment is created by all of us. If you pollute the nearby river, it shows that our mind is polluted. If we litter our surroundings, there's a symptom that our mind is full of wrong things. So no government, no agency can remove all these things from the society unless and until there is an attitudinal change is within us. That's the message of spiritual ecology. Not only thinking in a very selfish way, how the nature will affect us, but instead of that, how we can cooperate with nature, how we can respect nature, every life, whether it is moving or immovable. The ancient Rishi said, Sarva Charachara, that which are moving and not moving. If we can follow such a life, eco-friendly living, we need not spend large amount every year for cleaning the river, cleaning the Himalayan valleys, and all the rest. So, in spiritual ecology or deep ecology, some scientists call it, we are emphasizing our attitudinal change and to consider that this environment is our own creation. We have to change ourselves so the nature will change. As you know, all life in and around us consists of 5 elements: earth, water, fire, air, and ether. When we show reverence to these elements, we are honoring ourselves. The Yajurveda, one of the oldest Vedas, as stated by Madame Blavatsky, declares, may my 5 elements, earth, water, fire, air, and ether, become purified. May I become the light or the divine principle of life and intelligence, free from impurity and evil.
To this end, I offer this oblation into the consecrated fire. This is yajna. Taittiriya Aranyaka says, this is true yajna. I will later on say what is the meaning of yajna. As we know, these 5 elements have complemented each other to create a harmonious world, which is millions of years old. The judicious use of these natural elements by us makes our environment a living paradise. The use or abuse of our environment brings disaster to the individual and to mankind. The so-called natural calamities like flood, drought, and landslides are our own creation. Mother Nature has endowed mankind with all the intelligence and free will to act in the right direction and protect this world. The mythological representation of man as Atlas holding the earth on his back is a symbolic expression of our responsibility to protect this earth. When we examine the Upanishadic tradition, the first verse of Ishavasya Upanishad, Ishavasyam idam sarvam yat kinja jagatyam jagat, ephemeral word enveloped by the Lord. By renunciation, support yourself. Do not covet the wealth of anyone. Gandhiji described this verse as a sum and substance of Indian philosophy. This statement was made by Gandhiji when he visited Kerala long ago. Everything is enveloped by the spirit. There is no dead matter in nature. All is vibrating with life. Though hidden from our eyes, then there can be no question of destruction and hoarding. Another great Upanishad, which you may be familiar, is Shvetashvatara Upanishad proclaims. The Rishi says, you indeed are the blue bee. You indeed are the green parrot with red eyes. You indeed are possessed of lightning in your womb. You indeed are the seasons and the seas. You indeed are without beginning. You are omnipresent from whom all the world has sprung. The enlightened Rishi, who was one with nature, could see the divine presence, even in a small bee, a bird in the clouds, and the blue sea. In other words, the spiritually advanced person is fully awakened to the infinite possibilities of the smallest creatures and their role in preservation of the environment and nature. In the Vedic period, all sacrifices ended with the Shanti mantra. May peace rest upon bipeds and quadrupeds. The great rishis who meditated on the banks of the holy rivers prayed, O waters, you are the source of bliss. May they help us in strength, in great delightful vision. What most blissful essence there is in you, of that make us sharers like a loving mother. This mantra is chanted in Bharat Samaj Puja, which many of you may be familiar. Reverence towards plants like the tulasi, trees like the banyan tree are part of our Indian tradition and culture. The modern religious movements like the Theosophical Society, which contributed to the Indian Renaissance in the last century, and their leaders played a great role in the dissemination of these spiritual truths in the Eastern and Western world. Madame Blavatsky, founder of the Theosophical Society and a great occultist, states in her magnum opus, The Secret Doctrine, why every day the identity between the animal and the physical man, between the plant and man, and even between the reptile and its nest, the rock and man is more and more clearly shown. The physical and chemical constituents of all found to be identical. Occult science says not only the chemical compounds are the same, but the same infinitesimal, invisible lives compose the atoms of the bodies of the mountain and the daisy, of man and ant, of the elephant and of the tree, which shelters it from the sun. Each particle, whether you call it organic or inorganic, is a life. The foundation of her teachings and the fundamental principles of theosophy are based on this principle of one life. The first volume of the magazine,
the Theosophist, published in 1879, which she started to popularize occultism and theosophy, contains articles on the importance of protecting nature and the environment. An article, The Ruin of India, says, while every patriot Hindu bewails the decadence of his country, few realize its real cause. It is neither in foreign rule, excessive taxation, or crude and exhaustive husbandry, so much as the destruction of its forests. The Christian tradition, with the teachings of Jesus Christ, denounces the destruction of nature and any life form. In the Old Testament, God's command to Adam and Eve was to look after the Garden of Eden, to cultivate and preserve it. This earth is our Garden of Eden, which we must protect. Hoarding and amassing of wealth was condemned by Jesus, who proclaimed, look at the birds in the air. They do not sow or reap or store away in barns, yet your heavenly Father feeds them. But the selfish man, with an unnecessary fear for tomorrow, finds pleasure in possessing material things and natural resources in such quantities that it is tantamount to stealing from nature. Thomas A. Kempis, a great Christian mystic and author of The Imitation of Christ, says, if thy heart be right, then every creature would be a mirror of life and a book of holy doctrine. There is no creature so little and so worthless which does not represent the goodness of God. Islam also shows the path of compassion. All the 114 chapters of the Holy Quran starts with the name of Allah, the beneficent, the merciful. The great Sufi and Persian mystic poet Jalaluddin Rumi wrote, I died as mineral and became a plant. I died as plant and rose to animal. I died as animal and I was man. Why should I fear? When was I less by dying? Buddhism and Jainism, which are religions originated in India, emphasize the value of compassion and eco-friendly living. His Holiness Dalai Lama, in his keynote address to the Parliament of the World Religions held at Chicago, said, the religious people must accept more responsibility for the environment. The environment problem is especially dangerous because the problem can grow unnoticed. When noticed, it may be too late. This is very serious matter. The rise of vegetarianism, an eco-friendly trend. Due to many reasons, the number of vegetarians are increasing all over the world. This is a positive sign. Studies reveal that to produce a day's food for one meat eater, 4,000 gallons of water are required. 1,200 gallons for a lacto-vegetarian and 300 gallons for a complete vegetarian. To produce a single pound of meat, an average of 2,500 gallons of water is essential, which is 100 times more than the water needed to produce 1 pound of wheat. Rice takes more water than any other grain, but even rice requires only 1/10 of the water needed to produce 1 pound of meat. Fresh drinking water, which will be a rare commodity in the coming years, is wasted when used to produce meat. If we have to preserve the blue gold, we must follow a vegetarian lifestyle. On our planet, thousands of children starve to death every year, while food grains is squandered every day in raising livestock. Moreover, a much larger area of land is needed to produce food of animal origin than other food for human beings. The soil also becomes depleted due to uncontrolled grazing. A change to a vegetarian diet would combat ozone depletion also, since the problems arising from storage and distribution through refrigeration would end. Planting trees in and around temples, churches, and mosques should be considered so that they will be protected by devotees. Cleaning of rivers like Ganga and Yamuna can be done with religious zeal. We have already started such work. The local tanks and lakes
can also be clean and protected. The education system can also play an important role in cultivating an attitude based on the oneness of life among the children. The fundamental duties envisaged in the Indian Constitution, Article 51AG, include to protect and improve the natural environment, including forests, lakes, and wildlife, and to have compassion for all living creatures. But real environmental conservation should take place in the heart of every individual, because society is made up of various individuals. As framing new laws, passing various bills and resolutions do not contribute much, an attitudinal change is the need of the hour. To look at a tree as a tree and not as a wooden furniture or a log of wood. To see a river as a river, flowing with the energy, with the life energy it sustains us on this earth. To love a little lamb as an expression of divinity and not as a few pounds of meat. Only a holistic approach can save humanity from the present crisis. Jiddu Krishnamurti, thinker and philosopher, in a poem said, "Love not the shapely branch, nor place its image alone in thy heart. It dieth away. Love the whole tree, then thou shalt love the shapely branch, the tender and the withered leaf, the shy bud and the full-blown flower, the falling petal and the dancing light, the splendid shadow of full love. Or love life in its fullness with no decay. We must love the whole tree of life." Here ends the first part of my talk. Now, Binaji will continue, I think. Thank you so much, Dinakaran ji. You completed bang on time. And now I'll just welcome Beena ji with a small introduction. Beena ji, आपका स्वागत है. उन्होंने अपने प्री डिग्री टू MA महाराजास कॉलेज ऑफ एर्नाकुलम से किया है. वे BEd एट गवर्नमेंट ट्रेनिंग कॉलेज त्रिचूर से हुई हैं. PhD उन्होंने केरला यूनिवर्सिटी से किया है और उन्होंने संस्कृत केवी मैंगलोर से किया है, TGP, कन्नूर, अडूर, और उसके बाद उन्होंने ज्वाइन किया केरला स्टेट कॉलेजिएट एजुकेशन. वो रिटायर्ड हुई एसोसिएट प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत, महाराजा कॉलेज ऑफ एर्नाकुलम. वे लाइफ मेंबर हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी की, शंकरा लॉज एर्नाकुलम की, और वो 1992 से थियोसॉफी रही हैं सक्रियता से. अभी वे एर्नाकुलम में रहती हैं. आपका बहुत बहुत स्वागत और त्रिवेणी में आने के लिए धन्यवाद. नमस्ते. Shall I start? Yeah, please. Good evening, everyone. I would like to express my gratitude and appreciation to the organizers for giving me the opportunity to speak about the Malayalam summary of the speech delivered by Brother Dinakaran ji, and my best regards to everyone involved in this program today. ഏവർക്കും വിനീത നമസ്കാരം. ആത്മീയ പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രം നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും 5 ഘടകങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം. ഈ ഘടകങ്ങളോട് ആദരവ് കാണിക്കുന്നതിലൂടെ നാം നമ്മെ തന്നെ ബഹുമാനിക്കുന്നു. മേൽപ്പറഞ്ഞ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടട്ടെ എന്ന് യജുർവേദം പ്രസ്താവിക്കുന്നു. അശുദ്ധിയിൽ നിന്നും തിന്മയിൽ നിന്നും മുക്തമായ വെളിച്ചമായി തീരട്ടെ, അതിനായി വഴിപാട് യാഗാഗ്നിയിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു. ഇത് തൈത്തിരീയ ആരണ്യത്തിൽ പറയുന്നു. ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുള്ള ഒരു യോജിപ്പുള്ള ലോകം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ പരസ്പര പൂരകങ്ങളാകുന്നു. ഈ പ്രകൃതിദത്ത മൂലകങ്ങളുടെ യുക്തിസഹമായ ഉപയോഗം നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതിയെ ജീവനുള്ള ഒരു പർദീസയാക്കി മാറ്റും. നേരെ തിരിച്ചായെന്നാൽ മനുഷ്യരാശിയെ തന്നെ തകർക്കുന്ന
വെള്ളപ്പൊക്കം, വരൾച്ച, ഉരുൾപൊട്ടൽ തുടങ്ങിയ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളും നാം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നു. നല്ല രീതിയിൽ ചിന്തിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനും പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കാനുമുള്ള കഴിവ് പ്രകൃതി മാതാവ് തന്നെ മനുഷ്യരാശിക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഉപനിഷത്ത് പാരമ്പര്യം പരിശോധിച്ചാൽ ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്തിന്റെ ആദ്യ വാക്യം പറയുന്നു, ഇതിൽ എന്ത് മാറ്റമുണ്ടായാലും ക്ഷണികമായ ലോകം ഭഗവാൻ ആവരണം ചെയ്തതാണ്. പരിത്യാഗത്തിലൂടെ സ്വയം പിന്തുണയ്ക്കുക, ആരുടെയും സമ്പത്ത് മോഹിക്കരുത്. ഭാരതീയ ദർശനത്തിന്റെ ആകെ തുകയെന്നാണ് ഈ വാക്യത്തെ മഹാത്മജി വിശേഷിപ്പിച്ചത്. എല്ലാ വസ്തുക്കളും ആത്മാവിനാൽ പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പ്രകൃതിയിൽ നിർജീവമായ യാതൊരു പദാർത്ഥവുമില്ല. എല്ലാം നമ്മുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് മറഞ്ഞിരിക്കുകയാണെങ്കിലും ജീവൻ കൊണ്ട് സ്പന്ദിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നശീകരണത്തിന്റെയും പൂഴ്ത്തിവെപ്പിന്റെയും പ്രശ്നം ഉണ്ടാകില്ല. പ്രബുദ്ധനായ ഒരു ഋഷിക്ക് എല്ലാറ്റിലും ദൈവിക സാന്നിധ്യം ദർശിക്കാൻ കഴിയുന്നു. തുളസി പോലുള്ള ചെറു സസ്യങ്ങളോടും ആൽമരം പോലുള്ള വൻ വൃക്ഷങ്ങളോടുമുള്ള ബഹുമാനം നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തെയും പാരമ്പര്യത്തിന്റെയും ഭാഗമാണ്. ഇന്ത്യൻ നവോത്ഥാനത്തിന് സംഭാവന നൽകിയ തിയോസഫിക്കൽ സൊസൈറ്റി പോലുള്ള ആധുനിക പ്രസ്ഥാനങ്ങളും അവരുടെ നേതാക്കളും ഈ ആത്മീയ സത്യങ്ങൾ പാശ്ചാത്യ പൗരസ്ത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിൽ വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. തിയോസഫിക്കൽ സൊസൈറ്റിയുടെ സ്ഥാപകയും മഹത്തായ നിഗൂഢ ശാസ്ത്രജ്ഞയുമായ മാഡം H.P. ബ്ലൗസ്കി തന്റെ മഹത് കൃതിയായ ദ സീക്രട്ട് ഡോക്ടറിൽ ഇങ്ങനെ പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട്, എന്തിനാണ് എല്ലാ ദിവസവും മൃഗവും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള, ചെടിയും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള, ഉരകത്തിനും അതിന്റെ കൂടിനും ഇടയിൽ പോലും പാറയും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള സ്വത്വം കൂടുതൽ വ്യക്തമാക്കി കാണിക്കുന്നത്? ഭൗതികവും രാസപരവുമായ ഘടകങ്ങൾ എല്ലാറ്റിലും ഒരുപോലെ കാണപ്പെടുന്നു. മാഡം ബ്ലൗസ്കിയുടെ കൃതികളുടെ അടിത്തറയും തിയോസഫിയുടെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളും ഈ വൺ ലൈഫ് തത്വത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. തിയോസഫിസ്റ്റ് മാസികയുടെ ആദ്യ വാള്യം 1879 ആരംഭിച്ചതിൽ പ്രകൃതിയെയും പരിസ്ഥിതിയെയും സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ലേഖനങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ക്രിസ്ത്യൻ പാരമ്പര്യവും പ്രകൃതിയുടെയും ജീവന്റെയും നാശത്തെ അപലപിക്കുന്നു. പഴയ നിയമത്തിൽ ആദാമിനോടും ഹവ്വായോടും ദൈവം നൽകിയ കൽപ്പന ഏദൻ തോട്ടം പരിപാലിക്കാനും അത് നട്ടുവളർത്താനും സംരക്ഷിക്കാനുമായിരുന്നു. നമ്മുടെ ഈ ഭൂമി നാം സംരക്ഷിക്കേണ്ട ഏദൻ തോട്ടമാണ്. സമ്പത്ത് പൂഴ്ത്തിവെക്കുന്നതിനെയും ശേഖരിക്കുന്നതിനെയും യേശു ഇങ്ങനെ അപലപിച്ചു, ആകാശത്തിലെ പക്ഷികൾ വിതയ്ക്കുകയോ കൊയ്യുകയോ കളപ്പുരകളിൽ സൂക്ഷിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല, എന്നിട്ടും നിങ്ങളുടെ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് അവയെ പോറ്റുന്നു. എന്നാൽ നാളെയെക്കുറിച്ച് ഭയമുള്ള മനുഷ്യനാകട്ടെ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ മോഷ്ടിക്കുന്നതിനും അവ കൈവശം വയ്ക്കുന്നതിലും ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നു. മഹാനായ ക്രിസ്ത്യൻ മിസ്റ്റിക്കും ദ ഇമിറ്റേഷൻ ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റിന്റെ രചയിതാവുമായ തോമസ് എ കെംപിസ് പറയുന്നു, നിന്റെ ഹൃദയം ശരിയാണെങ്കിൽ ഓരോ സൃഷ്ടിയും ജീവിതത്തിന്റെ കണ്ണാടിയും വിശുദ്ധ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ പുസ്തകവുമായിരിക്കും. ദൈവത്തിന്റെ നന്മയെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യാത്ത ഒരു സൃഷ്ടിയും വളരെ ചെറുതോ വിലകെട്ടതോ അല്ല. ഇസ്ലാം മതത്തിലും അനുകമ്പയുടെ പാതകൾ കാണാൻ കഴിയുന്നു. വിശുദ്ധ ഖുറാനിലെ 114 അധ്യായങ്ങളും ആരംഭിക്കുന്നത് പരമകാരുണികനും കരുണാനിധിയുമായ അല്ലാഹുവിന്റെ നാമത്തിൽ എന്നാണ്. മഹാനായ സൂഫിയും പേർഷ്യൻ കവിയുമായ ജലാലുദ്ദീൻ റൂമി എഴുതിയിട്ടുള്ളത്, ഞാൻ ധാതുവായി മരിച്ച് ചെടിയായി, ചെടിയായി മരിച്ച് മൃഗമായി, മൃഗമായി മരിച്ച് മനുഷ്യനായി, ഞാൻ എന്തിനു ഭയക്കുന്നു? ഇന്ത്യയിൽ ഉത്ഭവിച്ച മതങ്ങളായ ബുദ്ധമതവും ജൈനമതവും പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദത്തിന്റെയും അനുകമ്പയുടെയും മൂല്യത്തെ ഊന്നിപ്പറയുന്നു. 1993 ചിക്കാഗോവിൽ നടന്ന ലോക മതങ്ങളുടെ പാർലമെന്റിൽ ദലൈലാമ മുഖ്യ പ്രഭാഷണത്തിൽ പരിസ്ഥിതിയുടെ കാര്യത്തിൽ വേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വത്തെ പറ്റി ഊന്നി പറയുന്നുണ്ട്. ഇത് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ അപകടങ്ങളിലേക്കാവും ചെന്നെത്തുക. വളരെ വൈകി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുമ്പോഴാകട്ടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അതീവ ഗുരുതരവുമായേക്കും. സസ്യാഹാരത്തിന്റെ ഉയർച്ചയും ഒരു പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ പ്രവണതയാണ്. ലോകമെമ്പാടും ഇപ്പോൾ സസ്യബുക്കുകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ്. ഇതൊരു നല്ല ലക്ഷണമാണ്. ക്ഷേത്രങ്ങൾ, പള്ളികൾ, മസ്ജിദുകൾ ഇവിടങ്ങളിലും പരിസരങ്ങളിലും മരങ്ങൾ നടുന്നത് പരിഗണിക്കുക. അതുമൂലം അവ ഭക്തരാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും.
വിദ്യാർത്ഥികളിൽ ജീവിതത്തിന്റെ ഏകത്വത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള മനോഭാവം വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിൽ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിനും പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കാൻ കഴിയും. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയാലും യഥാർത്ഥ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും ഹൃദയത്തിൽ നടക്കണം. വിവിധ വ്യക്തികൾ ചേർന്നതാണ് സമൂഹം. ഒരു മരത്തെ നാം മരമായി കാണുക, അല്ലാതെ അതുകൊണ്ടുള്ള ഫർണിച്ചറോ മരത്തിന്റെ തടിയെയോ അല്ല. ഒരു കുഞ്ഞാടിനെ 1 പൗണ്ട് മാംസമായി കാണാതെ ദൈവികതയുടെ പ്രകടനമായി കണ്ട് സ്നേഹിക്കുക. ഇതുപോലുള്ള സമഗ്രമായ സമീപനത്തിന് മാത്രമേ മനുഷ്യരാശിയെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ഇപ്പോഴത്തെ ഈ പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്ന് തത്വചിന്തകനായ ജെ കൃഷ്ണമൂർത്തി ഒരു കവിതയിൽ ഇങ്ങനെ കുറിക്കുന്നു: ആകൃതിയിലുള്ള ശാഖയെ സ്നേഹിക്കരുത്, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ അതിന്റെ ചിത്രം മാത്രം സ്ഥാപിക്കരുത്, അത് മരിക്കുന്നു. മുഴുവൻ മരത്തെയും സ്നേഹിക്കുക, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആകൃതിയിലുള്ള ശാഖയെ സ്നേഹിക്കും. ഇളം ഇലയും വാടിയ ഇലയും നാണിക്കുന്ന മുട്ടും നിറയെ വിടർന്ന പൂവും വീണ് കിടക്കുന്ന ഇതളുകളും നൃത്തം ചെയ്യുന്ന വെളിച്ചവും നിറഞ്ഞ പ്രണയത്തിന്റെ ഉജ്ജ്വലമായ നിഴൽ. ആഹാ, ജീവിതത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയിൽ സ്നേഹിക്കുക, അത് ജീർണത അറിയുന്നില്ല. ജീവിതത്തിന്റെ മുഴുവൻ വൃക്ഷത്തെയും നാം സ്നേഹിക്കണം. ധന്യവാദം. You also completed bang on time. Thank you so much. And now I will just invite Manjusha ji. एक छोटा सा परिचय देना चाहूंगा. डॉक्टर मंजुषा वानखेड़े जी एमकॉम, एमबीए और पीएचडी हैं और वे साथ ही साथ श्री कृष्ण थियोसॉफिकल सोसाइटी अमरावती की मेंबर हैं 2002 से. वर्किंग एज अ लेक्चरर इन शिवाजी आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज अमरावती. वे पुत्र वधू यानी डॉटर इन लॉ हैं मधुकर वानखेड़े जी की, जो एक बहुत ही सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ थियोसॉफी हैं. तो परिवार में ही थियोसॉफी है और वे आज हमारे त्रिवेणी पर आने को तैयार हुई. बहुत ही बहुत धन्यवाद और प्लीज अपना स्पीच शुरू करें. धन्यवाद. धन्यवाद सर. गुड इवनिंग ऑल. पहले तो मैं आप सभी त्रिवेणी मेंबर्स का धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने मुझे आज यहाँ पे बोलने की संधि दी है. और इसी के साथ मैं आज आपका अपना टॉपिक शुरू करती हूँ. आज का जो टॉपिक है स्पिरिचुअल इकोलॉजी यानी आध्यात्मिक पारिस्थितिकी. हमारे भीतर और आसपास के सभी जीवन में 5 तत्व होते हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश. जब हम इन तत्वों के प्रति श्रद्धा प्रकट करते हैं तो हम स्वयं का सम्मान कर रहे होते हैं. यजुर्वेद में कहा गया है कि मेरे 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश शुद्ध हो जाए. क्या मैं अशुद्धता और बुराई से मुक्त प्रकाश या जीवन और बुद्धि का दिव्य सिद्धांत बन सकता हूँ? इसके लिए मैं इस आहुति को पवित्र अग्नि में अर्पित करता हूँ. जैसा कि हम सब जानते हैं, यह 5 तत्व लाखों साल पुरानी एक सामंजस्य पूर्ण दुनिया बनाने के लिए एक दूसरे के पूरक है. हमारे द्वारा इन प्राकृतिक तत्वों का विवेकपूर्ण उपयोग हमारे पर्यावरण को एक जीवंत स्वर्ग बना देता है. हमारे पर्यावरण का उपयोग या दुरुपयोग व्यक्ति और मानव जाति के लिए आपदा लाता है. तथाकथित प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, सूखा और भूस्खलन हमारी अपनी रचना है. माँ प्रकृति ने मानव जाति को सही दिशा में कार्य करने और इस दुनिया की रक्षा करने के लिए सभी बुद्धि और स्वतंत्र इच्छा के साथ संपन्न किया है. जब हम उपनिषदिक परंपरा की जांच करते हैं तो ईसा उपनिषद का पहला श्लोक कहता है, इस क्षणिक दुनिया में जो कुछ भी परिवर्तन है वह सब कुछ प्रभु द्वारा आच्छादित है. त्याग से अपना समर्थन करें, किसी के धन का लालच ना करना. गांधी जी ने भी इस श्लोक को भारतीय दर्शन का सार तत्व बताया है. श्लोक में कहा गया है कि सब कुछ आत्मा से आच्छादित है. प्रकृति में कोई मृत पदार्थ नहीं है, सब कुछ जीवन में स्पंदित है.
हालांकि हमारी आंखों से छिपा हुआ है। तब विनाश और जमाखोरी का सवाल ही नहीं उठता। तुम वास्तव में नीली मधुमक्खी हो, तुम सचमुच लाल आंखों वाले हरे तोते हो, तुम सचमुच अपने गर्भ में बिजली के अधिकारी हो, तुम सचमुच ऋतु और समुद्र हो। आप वास्तव में बिना शुरुआत के हैं तो तू सर्वव्यापी है जिससे सारे जगत उत्पन्न हुए हैं। प्रबुद्ध ऋषि जो प्रकृति के साथ एक थे, एक छोटी मधुमक्खी, बादलों में एक पक्षी और नीले समुद्र में भी दिव्य उपस्थिति देख सकते थे। दूसरे शब्दों में, छोटे से छोटे जीवों की अनंत संभावनाओं और पर्यावरण और प्रकृति के संरक्षण में उनकी भूमिका के प्रति जागृति। वैदिक काल में सभी बलिदानों का अंत शांति मंत्र के साथ हुआ। शांति हमेशा द्विपाद और चौपाइयों पर रहे। हमारी पवित्र नदियों के तट पर ध्यान करने वाले महान ऋषियों ने प्रार्थना की, हे जल, तुम परमानंद के स्रोत हो, वे हमें महान रमणीय दृष्टि में शक्ति प्रदान करें। आप में क्या सबसे आनंदमय सार है, उसमें से हमें एक प्यारी माँ की तरह हिस्सेदार बनाओ। तुलसी जैसे पौधों के प्रति श्रद्धा, बरगद जैसे पेड़ हमारी भारतीय परंपरा और संस्कृति का हिस्सा है। मैडम HP ब्लैवेट्स्की, थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक और एक महान तांत्रिक, अपने महान कृति द सीक्रेट डॉक्ट्रिन में भी कहते हैं, क्यों हर दिन पशु और भौतिक मनुष्य के बीच, पौधे और मनुष्य के बीच, और यहाँ तक कि सरीसृप और उसके घोंसले के बीच, चट्टान और मनुष्य के बीच की पहचान अधिक से अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई जाती है। सभी के भौतिक और रासायनिक घटक तो समान पाए जाते हैं। यह गुप्तक विज्ञान न केवल रासायनिक यौगिक समान है, बल्कि वही असीम अदृश्य जीवन, पहाड़ और डेजी, मनुष्य और चींटी, हाथी और पेड़ के शरीर के परमाणुओं की भी रचना करते थे, जो इसे धूप से बचाता है। प्रत्येक कण, चाहे आप इसे कार्बनिक कहे या अकार्बनिक, यही एक जीवन है। उनकी शिक्षाओं की नींव और थियोसॉफी के मूल सिद्धांत एक जीवन के इस सिद्धांत पर ही आधारित है। ईसा मसीह की शिक्षाओं के साथ ईसाई परंपरा प्रकृति और किसी भी जीवन रूप के विनाश की निंदा करती है। पुराने नियम में आदम और हव्वा को परमेश्वर की आज्ञा अदन के बाग की देखभाल करने, उसे विकसित करने और संरक्षित करने की थी। यह पृथ्वी हमारा अदन का बगीचा है, जिसकी हमें रक्षा करनी चाहिए। धन की जमाखोरी और संग्रह की निंदा यीशु ने जिसने घोषणा की, हवा में पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं, न काटते हैं और न खलियानों में जमा करते हैं, तो भी हम तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। लेकिन स्वार्थी व्यक्ति कल के लिए अनावश्यक भय के साथ भौतिक चीजों और प्राकृतिक संसाधनों को इतनी मात्रा में रखने में आनंद पाता है कि यह प्रकृति से चोरी करने के समान है। थॉमस ए केम्पिस कहते हैं, यदि आपका हृदय सही है तो प्रत्येक प्राणी जीवन का दर्पण और पवित्र सिद्धांत की पुस्तक होगा। कोई प्राणी इतना छोटा और इतना बेकार नहीं है जो भगवान की भलाई का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। इस्लाम करुणा का मार्ग भी दिखाता है। पवित्र कुरान के सभी 114 अध्याय अल्लाह के नाम पर उपकार करने वाले दयालु से शुरू होते हैं। महान सूफी और फारसी रहस्यवादी कवि जलालुद्दीन रूमी ने लिखा, मैं खनिज के रूप में मर गया और एक पौधा बन गया, मैं पौधे के रूप में मरा और पशु बन गया, मैं पशु के रूप में मरता हूँ और मनुष्य था। मुझे क्यों डरना चाहिए, मैं मरकर कब कम था। बौद्ध धर्म और जैन धर्म, जो भारत में उत्पन्न होने वाले धर्म है, करुणा और पर्यावरण के अनुकूल जीवन के मूल्य पर जोर देते हैं। 14वें दलाई लामा ने शिकागो में आयोजित विश्व धर्मों की संसद को संबोधित करते हुए कहा, धार्मिक लोगों को पर्यावरण के लिए अधिक जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए। पर्यावरण की समस्या विशेष रूप से खतरनाक है, क्योंकि समस्या बेखबर बढ़ सकती है। ध्यान नहीं दिया
तो बहुत देर हो सकती है। यह बहुत गंभीर मामला है। दुनिया भर में शाकाहारियों की संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है। यह एक सकारात्मक संकेत है। अध्ययनों से पता चलता है कि 1 पाउंड मांस का उत्पादन करने के लिए औसतन 2500 गैलन पानी आवश्यक है, जो 1 पाउंड गेहूं के उत्पादन के लिए आवश्यक पानी से 100 गुना अधिक है। चावल किसी भी अन्य अनाज की तुलना में अधिक पानी लेता है, लेकिन चावल को भी 1 पाउंड मांस के उत्पादन के लिए आवश्यक पानी का केवल 10वां हिस्सा ही चाहिए। ताजा पेयजल, जो आने वाले वर्षों में एक दुर्लभ वस्तु होगी, जब मांस का उत्पादन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो वह बर्बाद हो जाता है। अगर हमें नीले सोने को संरक्षित करना है, तो हमें शाकाहारी जीवन शैली का ही पालन करना होगा। हमारे ग्रह पर हर साल हजारों बच्चे भूख से मर जाते हैं, जबकि खाद्यान्न हर दिन पशुओं को पालने में बर्बाद हो जाता है। इसके अलावा मनुष्य के लिए अन्य भोजन की तुलना में पशु मूल के भोजन का उत्पादन करने के लिए भूमि के एक बड़े क्षेत्र की आवश्यकता भी होती है। अनियंत्रित चराई के कारण मिट्टी भी नष्ट हो जाती है। शाकाहारी भोजन में बदलाव से ओजोन रिक्तीकरण का भी मुकाबला होगा, क्योंकि प्रशीतन के माध्यम से भंडारण और वितरण से उत्पन्न होने वाली समस्याएं समाप्त हो जाएगी। मंदिरों, गिरजाघरों और मस्जिदों में और उसके आसपास पेड़ लगाने पर विचार किया जाना चाहिए, ताकि भक्तों द्वारा उनकी रक्षा की जा सके। गंगा और यमुना जैसी नदियों की सफाई धार्मिक उत्साह से की जा सकती है। स्थानीय तालाबों और झीलों को भी साफ और संरक्षित किया जा सकता है। शिक्षा प्रणाली भी बच्चों में जीवन की एकता पर आधारित दृष्टिकोण विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। लेकिन वास्तविक पर्यावरण संरक्षण प्रत्येक व्यक्ति के दिल में होना चाहिए, क्योंकि समाज विभिन्न व्यक्तियों से बना है। चूंकि नए कानून बनाना, विभिन्न विधेयकों और प्रस्तावों को पारित करना ज्यादा योगदान नहीं देता है, इसलिए एक दृष्टिकोण परिवर्तन समय की आवश्यकता है। एक पेड़ को एक पेड़ के रूप में देखने के लिए न कि लकड़ी के फर्नीचर या लकड़ी के लॉक के रूप में देखें। एक नदी को जीवन की ऊर्जा के साथ बहने वाली नदी के रूप में देखने के लिए, जो हमें इस धरती पर बनाए रखती है। एक छोटे से मेमने को देवत की अभिव्यक्ति के रूप में प्यार करने के लिए, न कि कुछ पाउंड मांस के रूप में देखें। केवल एक समग्र दृष्टिकोण ही मानवता को बचा सकता है। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद मंजुषा जी, और बहुत बढ़िया आपने ट्रांसलेशन किया। विशेषकर वो बीच में जो कविताएं और छोटी छोटी चीजें थी, उसको भाषाई ट्रांसलेशन में उसके वस्तु को न खोना और उसके मतलब को न खोना बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। दिनाकरन जी, प्लीज, यू आर वेलकम फॉर द पार्ट 2 ऑफ योर टॉक। Thank you, Taral ji. The translations are very fine, Malayalam and also Hindi. I am भाषण देने में समर्थ नहीं हूँ हिंदी में, लेकिन अच्छी तरह समझता हूँ हिंदी। टेक्स्ट बुक हिंदी है अच्छी तरह, इसलिए I would like to start. Yes sir, please start. Second part of my talk, which I would like to start with the very important Magna Carta document of the environmentalist known as the Chief Seattle's Letter, or the Rendidian Chief Speech, delivered in 1854 at Washington. His speech was a response to the treatment of the American government for buying the land of Native Americans. The speech deplores the carelessness of the white people towards the environment. It also focuses on the degradation of ecological balance and a plea to protect nature. It goes like this. It's very interesting. It is available in the net. You can read the full version. I shall read a certain portion of that letter. How can you buy or sell the sky, the warmth of the land? The idea is strange to us. If we do not own the freshness of the air and the sparkle of the water, how can you buy them from us? Every part of this earth is sacred to my people. That means residents.
Every shining pine needle, every sandy shore, every mist in the dark woods, every clearing, the humming insect is holy in the memory and experience of my people. The sap which courses through the trees carries the memories of the red man. Our dead never forget this beautiful earth, for it is the mother of the red man. We are part of the earth, and it is part of us. The perfumed flowers are our sisters, the deer, the horse, the great eagle. These are our brothers. The rocky crest, the juices in the meadows, the body heat of the pony. Man all belong to the same family. The shining water that moves in the streams and rivers is not just water, but the blood of our ancestors. The rivers are our brothers. They quench our thirst. The rivers carry our canoes and feed our children. If we sell you our land, you must remember that and teach your children that the rivers are our brothers and yours, and you must henceforth give rivers the kindness you would give any brother. That was the concept of the Red Indian chief, to remain the chief at Washington. What's the importance of this land? What's the importance of earth which we dwell in? So this letter is considered as a very important letter for all the time. Though it was written 100 years back, it is still relevant, more relevant today in this world where people are alienated themselves from nature. The United Nations Environment Program celebrates 5th of June every year. Day before yesterday, they celebrated it. And this year, it was hosted in Sweden. And the campaign slogan was "Only One Earth." This is more closely related to the teachings of secret doctrine, because long ago, Blavatsky said, Moon is a dead planet, but we were not satisfied. Scientists were not satisfied. They went there, they got the rocks from there, finally found that there is no water existing in Moon, so human existence is impossible. That's the case with many planets in this solar system. There is no oxygen, there is no water, then human life is impossible in such planets. It actually began only very recently. In 1972 only this Environment Day and celebrations officially started. But even before that, theosophies, as in the other part of the talk I said, the first volume of the Theosophies magazine emphasized the need of preserving the forest life, lakes and all those things. It was written long back. Blavatsky's book, Voice of the Silence, may be familiar to many serious students like you. It says, help nature and work with her. Nature will regard thee as one of her creators and make obeisance. This is written, small aphorism in the Voice of the Silence. C.W. Leadbeater, in his commentary, says, nature is conquered by obedience. Previously, in the last century, people were saying conquer nature because scientific advancement have improved. So we can cut down trees quickly. We can make profit. We can transport them very quickly. We will conquer the nature. It was a slogan of the proud man in the 20th century beginning. But now people say, work with nature. That is the message. Nature is conquered by obedience. In the modern world, we are using the natural laws as the pressure of steam and electricity for our advantage. The world can progress only if we cooperate and obey the nature and its unchangeable laws. The same text, Voice of the Silence, describes how the nature rejoices when a chela takes his or her first initiation or who has reached the further shore. It's a poetic way of presenting things.
how nature is closely related to man, his spiritual progress and all that. You can see how the nature enjoyed when Buddha was born. That is written, beautifully written in Light of Asia. It says, Voice of the Silence, no conqueror of sins, once that Savani hath crossed the seventh path, all nature thrills with joyous awe and feels subdued. The silver star now singles out the news to the night blossoms, the streamlet to the pebbles, ripples out the tail, dark ocean waves will roar it to the rocks, surf-bound scent, leaden breezes sing it to the vales, and stately pines mysteriously whisper, Master has arisen, Master of the day. See how nature is related to the occult world. In Bhagavad Gita, 3rd chapter, sloka 14 says, from food creatures becomes, from rain is the production of food. Rain proceeds from sacrifice. Sacrifice arises out of action. Rain, the blessing of nature, is essential for human life. Our ancestors realized this fact and they even worship the rain gods. Here Gita emphasizes the need of sacrifice or nishkama karma by all of us. In an agrarian society like India, yajna also means plowing the land for cultivation, and aja, sacrificing aja means God in normal language. Aja means unborn seed. That is, after plowing the land, we have to put seed on it. And at the due season, it will reap more crop. Light on the path, another gem of the theosophical literature says, listen to the song of life. Dr. Besant in her commentary says, to see that reality behind things is to listen to the song of life. The song of life is the force which is all the time running under life. All the different movements in nature have sound and color as their expressions and accomplishments. There are others of which we know nothing, but at least sound and color are within our experience. It is possible to learn to hear something of the harmony of nature and to see something of its beauty and glory and order. And it is in that way, more than in any other, that one may come to be quite certain that all things are working together for good. The disorder is nothing but a slight disturbance formed on the surface. The real depth of the sea lies beneath, and that obeys the divine law perfectly. This divine law or balance in nature is that a reflection of inner spiritual harmony, which the Indian rishis called rhythm, the nature of reality in its absolute state. Rhythm Satyam Param Brahmam is a great mantra. Rhythm is the nature of Brahma. The universes which emerge, evolve, complete their allotted tasks and dissolve. Harmony and balance form the basis of this whole process. The first of the three fundamental propositions of the secret doctrine by H.P. Blavatsky reads as follows: an omnipresent, eternal, boundless, and immutable principle on which all speculation is impossible, since it transcends the power of human conception and can only be dwarfed by any human expression or similitude. It is beyond the range and reach of thought, in the words of Mandukya Upanishad, unthinkable and unspeakable. H.P. Blavatsky explains this one reality in terms of its dual aspects of life and form, matter and energy. Spiritual ecology is rising above these limitations and fragments of reality caused by analytical and separative tendencies of the mind. I would like to introduce you some books, some films, and even some movements which in the present world connected with the environmental and ecological movement. One film, some of you might have seen it at there, named An Inconvenient Truth.
by former Vice President of America, Mr. Al Gore. It is available in the YouTube, I think. It is part of his campaign to educate people against the global warming. Now, it is a serious threat. A must-see film by all of us. The documentary was a critical and commercial success, winning 2 Academy Awards for Best Documentary Feature and Best Original Song. The film has been credited for raising international public awareness of global warming and re-energizing the environmental movement. The documentary has also been included in the science curricula in schools around the world. Another book is very important, which is Silent Spring by Rachel Carson. The book was published in 27 September 1962. The book documented the environmental harm caused by the indiscriminate use of pesticides. Really speaking, the word pesticide is corrupt since it kills all the bacteria, earthworms, butterflies, bees, and other useful insects for pollination and fertility of land. World has now realized the menace of synthetic pesticides. The US government banned the use of DDT for agriculture users. The book Silent Spring was named one of the 25 great science books of all the time by the editors of Discover magazine. Another book published in Malayalam, known as N Magaje, by the author Ambika Sudan Mangat. This book is based on the real life of the people in a village known as N Magaje in Kasaragod district of Kerala. The victims are the genetically deformed children due to the spraying of endosulfan pesticide on cashew plantations. This novel is used as a textbook in 7 universities. The book brought the attention to the plight of the pesticide victims. The book has already been published in the 17th edition in various languages like Kannada, Tamil, and English. A Hindi version has also been published by the Dakshin Bharat Hindi Prachar Sabha. Various poets in and around India wrote poems in various regional languages on nature and its rape by man, like Dr. N.V. Krishnavariyar, Sugata Kumari, Dr. Ayyappa Panikkar, etc. The list is very long, one which includes various other languages also. Another movement which comes to our mind is Chipko movement by Sundarlal Bahuguna against cutting down of trees, organizing local people. That was the importance of that movement. Narmada Bachao Andolan by Medha Patkar and Silent Valley movement by Dr. N.V. Krishnavariyar and Sugata Kumari are worth mentioning. The Silent Valley movement was an environment movement started in the 70s in Kerala against the proposal of Kerala government and Kerala State Electricity Board to set up a dam in a river Kundipura and generate a few units of electricity. Dr. N.V. Krishnavariyar and Padma Shri Janaki Ammal, she is Malayali world famous botanist, were in the forefront of the struggle. Fortunately, due to the public protest, the government of Kerala dropped the project, and now we have that beautiful ecological park, Silent Valley. We have to gratefully remember the names of great theosophists who stood for protecting nature and ecology. Many of you might have heard about Mr. Francis Brunel, a theosophist who devoted his whole life for the nature and environment. He visited Ananda Lodge, Trivandrum in 1982. He was a great lover of nature, painter, sculptor, diplomat, man of science and philosophy. He became the counselor at UNESCO for education and technical assistance. He founded the movement for the preservation of life and nature and campaigned for universal understanding and brotherhood as a real ambassador of nature. He was one of the pioneers of Project Tiger. Then comes Dr. Rukmani Devi Arunte, founder of Kalakshetra at Chennai. He was not only a great theosophist and Indian classical dancer, but a strong crusader of vegetarianism and animal rights. In 1952, she was nominated to the Rajya Sabha and she raised the issue of animal rights. In 1953, she introduced a private bill in the parliament to prevent cruelty to animals. This bill later on paved the way to the enactment of SPCA Act. In 1956, she again raised the environmental threat and cruelty involved in exporting frog legs for gaining dollars. At last, government of India banned exporting frog legs. The frogs were really helping us, and farmers
by devouring mosquitoes and other insects harmful to man and farm. He was the first president of the World Vegetarian Congress, inaugurated by Dr. Rajendra Prasad, then President of India. Brother C. Jinrajadasa, fourth president of the Theosophical Society, was a great lover of nature. He brought saplings of various trees from the nations he visited and planted at Adayar Estate. The trees we can see at Adayar Estate, like mahogany and banyan, were planted during his time. Theosophists always stood to protect nature and environment. The great banyan tree was uprooted in the 1989 cyclone. Various organizations came forward to set it right again. Various newspapers and journals praised this action and wrote editorials, including Malayalam newspaper Madhrubhumi and the Kungumam weekly. At the time, editor was Dr. N.V. Krishna Variyar. Due to the pioneer work of the Theosophists in and around Kerala, animal rights are protected. Due to the campaign of Theosophists in Kerala, the Regent Queen of Travancore Princely State banned animal sacrifice in various temples owned by the government. This led other princely states like Cochin to follow the path. One should shun the notion of development by the construction of huge dams, railway lines, etc., by destroying the nature and environment. Indiscriminate felling of forests leads to landslide and unexpected floods we witnessed a few years ago in Kerala. We have to protect our lakes, rivers, backwaters, and its marine resources. Land mining, draining sand from rivers are a real threat we face currently. Mangroves have the capacity to prevent even tsunami. Destruction of wildlife will tilt the balance of nature because the web of life is closely interrelated and interlinked. The story of the bird dodo is before us. I would like to conclude this talk by quoting Rabindranath Tagore, who loved nature in its all beauty and diversity. The same stream of life that runs through my veins night and day runs through the world and dances in rhythmic measure. It is the same life that shoots in joy from the dust of the earth in numberless blades of grass and breaks into tumultuous waves of leaves and flowers. Thank you. Thank you, Dinakaran ji. Now, Beena ji, I will request you to complete your Malayalam part. Thank you. I am continuing the Malayalam speech. Second. ചീഫ് സിയാറ്റിലിന്റെ പ്രസംഗം അഥവാ 1854 വാഷിംഗ്ടണിൽ നടത്തിയ റെഡ് ഇന്ത്യൻ ചീഫ്സ് പ്രസംഗം പരിസ്ഥിതിവാദിയുടെ ബൈബിളായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. പരിസ്ഥിതിയോടുള്ള വെള്ളക്കാരുടെ അശ്രദ്ധയെ പ്രസംഗം അപലപിച്ചിരുന്നു. ആകാശം, ഭൂമിയുടെ കുളിർമ ഇവ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വാങ്ങാനോ വിൽക്കാനോ കഴിയും? ഈ ആശയം ഞങ്ങൾക്ക് വിചിത്രമാണ്. വായുവിന്റെ ശുദ്ധതയും വെള്ളത്തിന്റെ തിളക്കവും ഞങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വാങ്ങാനാകും? ഭൂമി മനുഷ്യരുടെ അമ്മയാണ്. നമ്മൾ ഭൂമിയുടെ ഭാഗമാണ്. സുഗന്ധമുള്ള പൂക്കൾ നമ്മുടെ സഹോദരിമാരാണ്. മാൻ, കുതിര, കഴുകൻ തുടങ്ങിയവ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളാണ്. തോടുകളിലും നദികളിലും ഒഴുകുന്ന തിളങ്ങുന്ന ജലം വെറും ജലമല്ല, നമ്മുടെ പൂർവികരുടെ രക്തമാണ്. നദികൾ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളാണ്. അവ നമ്മുടെ ദാഹം ശമിപ്പിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ പോകുന്നു ആ പ്രസംഗം. യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് എൻവയോൺമെന്റ് പ്രോഗ്രാം എല്ലാ വർഷവും ജൂൺ 5 ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനമായി ആഘോഷിക്കുന്നു. ഈ വർഷം സ്വീഡനാണ് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്നത്. ഒരു ഭൂമി മാത്രം എന്നത് പ്രകൃതിയുമായി ഇണങ്ങി ജീവിക്കുന്ന സുസ്ഥിരത എന്ന മുദ്രാവാക്യമാണ്. ഈ ആശയം 20ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ആധുനിക മനുഷ്യന്റെ പ്രകൃതിയെ കീഴടക്കുക എന്ന സങ്കല്പത്തിന് തികച്ചും വിരുദ്ധമാണ്. 1972 UN ജനറൽ അസംബ്ലി സ്റ്റോക്ക്ഹോമിന്റെ ആദ്യ ദിവസം ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം സ്ഥാപിച്ചതോടെയാണ് പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിന്റെ ഉദ്ഭവം. 2 വർഷത്തിന് ശേഷം 1974 ആദ്യത്തെ ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം ഒരു ഭൂമി മാത്രം എന്ന പ്രമേയത്തിൽ നടന്നു.
നിശബ്ദതയുടെ ശബ്ദം. പ്രകൃതി സ്നേഹിയായ മാഡം HP ബ്ലാസ്കി പറയുന്നു, പ്രകൃതിയെ സഹായിക്കുകയും പ്രകൃതിയോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുക. പ്രകൃതി 3 പേരെ അവളുടെ സൃഷ്ടാക്കളിൽ ഒരാളായി കണക്കാക്കുകയും പ്രണാമം അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. CW ലെഡ്ബീറ്റർ തന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, പ്രകൃതിയെ കീഴടക്കുന്നത് അനുസരണത്തിലൂടെയാണ്. ആധുനിക ലോകത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നേട്ടത്തിനായി നീരാവിയുടെയും വൈദ്യുതിയുടെയും സമ്മർദ്ദം എന്ന നിലയിൽ പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾ പ്രകൃതിയോടും അതിൻ്റെ അന്തമില്ലാത്ത നിയമങ്ങളോടും സഹകരിച്ച് അനുസരിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ലോകം പുരോഗമിക്കുകയുള്ളൂ. ഭഗവത്ഗീതയുടെ 3-ാം അധ്യായം 14-ാമത്തെ ശ്ലോകം. അന്നാദ് ഭവന്തി ഭൂതാനി പർജന്യാദ് അന്ന സംഭവ യജ്ഞാത് ഭവതി പർജന്യോ യജ്ഞ കർമ്മ സമുദ്ഭവ. എന്നാൽ ഭക്ഷണം ജീവികളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നു. മഴയിൽ നിന്ന് ആഹാരം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. മഴ യജ്ഞത്തിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്നു. യജ്ഞമാകട്ടെ കർമ്മത്തിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്നു. ലൈറ്റ് ഓൺ ദ പാത്ത് പറയുന്നു, ജീവിതഗാനം കേൾക്കൂ. ഡോക്ടർ ആനി ബസൽ തന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ പറയുന്നത്, കാര്യങ്ങൾക്ക് പിന്നിലെ യാഥാർത്ഥ്യം കാണുന്നതിന് ജീവിതഗാനം കേൾക്കുക എന്നതാണ്. ജീവിതത്തിന്റെ ഗാനം ജീവിതത്തിന് കീഴിൽ എല്ലാ സമയത്തും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശക്തിയാണ്. പ്രകൃതിയിലെ എല്ലാ വ്യത്യസ്ത ചലനങ്ങൾക്കും ശബ്ദവും നിറവും ഉണ്ട്. പ്രകൃതിയുമായുള്ള ഇണക്കത്തിലെ നമുക്ക് ശബ്ദവും നിറവും കേൾക്കാനും കാണാനും ആസ്വദിക്കാനും കഴിയും. കടൽ താഴെ കിടക്കുന്നത് ദൈവിക നിയമം അനുസരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. പ്രകൃതിയുടെ സന്തുലിതാവസ്ഥയെ, ആത്മീയ ഐക്യത്തിന്റെ പ്രതിഫലനത്തെ ഇന്ത്യൻ ഋഷിമാർ ഋതം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ സ്വഭാവം, അതിന്റെ സമ്പൂർണതയിൽ ഋതം സത്യം പരംബ്രഹ്മം എന്ന മഹാമന്ത്രമാണ് ഋതം. HP ബ്ലാസ്കിയുടെ രഹസ്യ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ 3 അടിസ്ഥാന നിർദ്ദേശങ്ങളിൽ ആദ്യത്തേത്, എല്ലാ ഊഹാപോഹങ്ങളും അസാധ്യമായ സർവവ്യാപിയും ശാശ്വതമായ ഒരു തത്വമാണ്. കാരണം അത് മനുഷ്യ സങ്കല്പത്തിന്റെ ശക്തിയെ മറികടക്കുന്നു. അസുഖകരമായ ഒരു സത്യം. മുൻ അമേരിക്കൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മിസ്റ്റർ അൽഗോറിന്റെ ഈ അമേരിക്കൻ ഡോക്യുമെന്ററിയുടെ പേര് ഇൻകൺവെൻഷണൽ ട്രൂത്ത്. ആഗോള താപനത്തിനെതിരെ ജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിക്കുന്ന പ്രചാരണത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു. മികച്ച ഡോക്യുമെന്ററിക്കും ഒറിജിനൽ ഗാനത്തിനുമുള്ള 2 അക്കാദമി അവാർഡുകൾ നേടിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഡോക്യുമെന്ററി. പരിസ്ഥിതി പ്രസ്ഥാനത്തെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ചതിനും ഈ ചിത്രം ഏറെ പ്രശംസിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. റേച്ചൽ കാഴ്സൺ നിശബ്ദ വസന്തം. 1962 സെപ്റ്റംബർ 27 പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഈ പുസ്തകം കീടനാശിനികളുടെ വിവേചനരഹിതമായ ഉപയോഗം മൂലമുണ്ടാകുന്ന പാരിസ്ഥിതിക ദോഷങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. അടുത്തത് എൻമകജെ. അംബികാസുധൻ മാങ്ങാട് എഴുതിയതാണ് എൻമകജെ. കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ എൻമകജെ എന്ന ഗ്രാമത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തെ ആസ്പദമാക്കി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള പുസ്തകമാണ്. അവിടത്തെ കശുവണ്ടിത്തോട്ടങ്ങളിൽ എൻഡോസൾഫാൻ കീടനാശിനി തളിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ജനിതക വൈകല്യം സംഭവിച്ച കുട്ടികളാണ് ഇവിടെ ഇരകൾ. ഈ പുസ്തകം 7 സർവകലാശാലകളിൽ പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതായി അറിയുന്നു. സുഗതകുമാരി, അയ്യപ്പ പണിക്കർ, NV കൃഷ്ണവാര്യർ തുടങ്ങിയ കവികൾ മനുഷ്യൻ പ്രകൃതിയെ നശിപ്പിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കവിതകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. മരങ്ങൾ വെട്ടിമാറ്റുന്നതിനെതിരെ സുന്ദർലാൽ ബഹുഗുണയുടെ ചിപ്കോ മൂവ്മെന്റ്, മേധാ പട്കറിന്റെ നർമ്മദ ബച്ചാവോ ആന്തോളൻ, NV കൃഷ്ണവാര്യർ, സുഗതകുമാരി എന്നിവരുടെ സൈലന്റ് വാലി മൂവ്മെന്റ് എന്നിവയും എടുത്തു പറയാവുന്നവയാണ്. 70കളിൽ കേരളത്തിൽ ആരംഭിച്ച പരിസ്ഥിതി പ്രസ്ഥാനമാണ് സൈലന്റ് വാലി മൂവ്മെന്റ്. പ്രകൃതിയെയും പരിസ്ഥിതിയെയും സംരക്ഷിക്കാൻ വലിയ പങ്കുവഹിച്ച
മഹാന്മാരായ തിയോസഫിസ്റ്റുകളെയും നാം നന്ദിപൂർവം ഇത്തരുണത്തിൽ സ്മരിക്കേണ്ടതാണ്. അവരിൽ ഒരാളാണ് ബ്രദർ ഫ്രാൻസിസ് ഡൂണൻ. തൻ്റെ ജീവിതം മുഴുവൻ അദ്ദേഹം പ്രകൃതിക്കും പരിസ്ഥിതിക്കും വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചു. 1982 ഫെബ്രുവരി 10 അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരത്തെ അനന്ത ലോഡ്ജ് സന്ദർശിക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ചെന്നൈയിലെ കലാക്ഷേത്രയുടെ സ്ഥാപകയായ ഡോക്ടർ രുക്മിണി ദേവി അരുണ്ടെ മികച്ച തിയോസഫിസ്റ്റും ഇന്ത്യൻ ക്ലാസിക്കൽ നർത്തകിയും മാത്രമല്ല, സസ്യാഹാരത്തിന്റെയും മൃഗ അവകാശത്തിന്റെയും ശക്തയായ സമരസേനാനിയുമായിരുന്നു. 1952 അവർ രാജ്യസഭയിലേക്ക് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി. മൃഗങ്ങളോടുള്ള ക്രൂരത തടയുന്നതിനായി അവർ 1953 പാർലമെന്റിൽ സ്വകാര്യ ബിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രപതിയായിരുന്ന ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത വേൾഡ് വെജിറ്റേറിയൻ കോൺഗ്രസിന്റെ ആദ്യ പ്രസിഡന്റുമായിരുന്നു രുക്മിണി ദേവി. ബ്രദർ സി ജിനരാജദാസ തിയോസഫിയുടെ 4ാമത്തെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു. മികച്ച പ്രകൃതി സ്നേഹിയുമായിരുന്നു എന്നതിന്റെ തെളിവാണ് അദ്ദേഹം സന്ദർശിച്ച രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും വിവിധ തരം വൃക്ഷത്തൈകൾ കൊണ്ടുവന്ന് അടയാർ എസ്റ്റേറ്റിൽ നട്ടുവളർത്തിയത്. തിയോസഫിസ്റ്റുകളുടെ പയനിയർ പ്രവർത്തനത്താൽ ഇന്ത്യയിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും മൃഗങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. പ്രകൃതിയെയും പരിസ്ഥിതിയെയും നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഡാമുകളും റെയിൽവേ ലൈനുകളും മറ്റും നിർമ്മിച്ച് വികസനം എന്ന ആശയം നടപ്പാക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്. വനങ്ങൾ വെട്ടിമാറ്റുന്നതിലൂടെ വെള്ളപ്പൊക്കവും മണ്ണിടിച്ചിലുകളും ഉണ്ടാകുന്നു. ഈ ദുരന്തങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചതുമാണ്. നമ്മുടെ തടാകങ്ങളും നദികളും കായലുകളും സമുദ്ര സമ്പത്തും നാം സംരക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. ഭൂമി ഖനനം, നദികളിൽ നിന്ന് മണൽ വാരൽ എന്നിവ നാം നേരിടുന്ന ഭീഷണികളാണ്. സുനാമിയെ പോലും തടയാനുള്ള ശേഷി കണ്ടൽക്കാടുകൾക്കുണ്ട്. വന്യജീവികളുടെ നാശം പ്രകൃതിയുടെ സന്തുലിതാവസ്ഥയെ തളർത്തും. പ്രകൃതിയെ അതിൻ്റെ എല്ലാ സൗന്ദര്യത്തിലും വൈവിധ്യത്തിലും അങ്ങേയറ്റം സ്നേഹിച്ച രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോറിനെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പ്രഭാഷണം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. രാവും പകലും എൻ്റെ സിരകളിലൂടെ ഒഴുകുന്ന അതേ ജീവിത പ്രവാഹം ലോകമെമ്പാടും ഓടുന്നു. താളാത്മകമായി നൃത്തം ചെയ്യുന്നു. എണ്ണമറ്റ പുൽത്തകിടികളിൽ ഭൂമിയിലെ പൊടിപടലങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ ആനന്ദം തുളുമ്പുന്ന അനേക ജീവിതം തന്നെയാണ് ഇലകളുടെയും പൂക്കളുടെയും പ്രക്ഷുബ്ധമായ തിരമാലകളായി പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നത്. Only the summary of that speech I have taken. Thank you. Nandi. Thank you बीना जी, बहुत ही बढ़िया फ्लो में रहा. और मंजुषा जी, अब आप अपना समापन कीजिए 9 मिनट में पार्ट 2 का. धन्यवाद. धन्यवाद सर. अभी मैं दूसरे भाग का हिंदी अनुवाद आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ. 1854 में वॉशिंगटन में दिए गए चीफ सिएटल भाषण को पर्यावरणविदों की बाइबल माना जाता है. यह भाषण गोरे लोगों की पर्यावरण के प्रति लापरवाही की निंदा करता है. इस पृथ्वी का प्रत्येक भाग मेरे लोगों के लिए पवित्र है. हर रेतीले किनारे, अंधेरे जंगल में हर धुंध, हर समाशोधन और गुनगुनाता कीट मेरे लोगों की स्मृति और अनुभव में पवित्र है. पेड़ों के माध्यम से बहने वाला रस लाल आदमी की यादें ले जाता है. हमारे मृत इस खूबसूरत धरती को कभी नहीं भूलते, क्योंकि यह लाल पुरुषों की माँ है. हम पृथ्वी का हिस्सा है और यह हमारा हिस्सा है. सुगंधित फूल हमारी बहनें हैं. हिरण, घोड़ा, महान चील ये हमारे भाई है. चट्टानी चट्टाने, घास के मैदानों में रस, टट्टू के शरीर की गर्मी और मनुष्य सभी एक ही परिवार के हैं. झरनों और नदियों में बहता चमकीला पानी सिर्फ पानी नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजों का खून है. नदियां हमारे भाई हैं, वे हमारी प्यास बुझाते हैं.
तो तुम्हें अपने बच्चों को याद रखना और सिखाना चाहिए कि अब से तुम नदियों को वह दया देना जो तुम किसी भी भाई को देना चाहते थे। द वॉइस ऑफ द साइलेंस द्वारा HP ब्लैवेट्स्की कहते हैं, प्रकृति की मदद करें और उसके साथ काम करें, और प्रकृति आपको अपने रचनाकारों में से एक मानेगी और नमन भी करेगी। CW लेडबिटर ने अपनी टिप्पणी में कहा है, प्रकृति आज्ञाकारिता से जीती जाती है। आधुनिक दुनिया में हम अपने फायदे के लिए प्राकृतिक नियमों को भाप और बिजली के दबाव के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। यह दुनिया तभी आगे बढ़ सकती है जब हम प्रकृति और उसके अपरिवर्तनीय नियमों का सहयोग करें और उनका पालन करें। वही पार्ट्स वॉइस ऑफ द साइलेंस बताता है कि जब कोई चेला अपनी पहली दीक्षा लेता है या जो आगे के किनारे पर पहुंच जाता है, तो प्रकृति कैसे आनंदित होती है। चांदी का तारा अब रात के खिलने के लिए खबर को टिमटिमाता है। कंकड़ की धारा कहानी को चीर देती है। अंधेरे समुद्र की लहरें इस चट्टानों पर गर्जना करेंगी। सुगंधित हवाएं इसे घाटियों में गाती है और रहस्यमय रूप से कानाफूसी करती है। यानी क्या, एक मास्टर पैदा हुआ, दिन का एक मास्टर। देखिए कैसे प्रकृति का तांत्रिक जगत से संबंध है। भगवद गीता में तीसरे अध्याय श्लोक 14वें श्लोक में कहा गया है कि भोजन से जीव बनते हैं, वर्षा से अन्न की उत्पत्ति होती है, यज्ञ से वर्षा होती है, कर्म से यज्ञ की उत्पत्ति होती है। बारिश प्रकृति की कृपा मानव जीवन के लिए जरूरी है। हमारे पूर्वजों ने इस तथ्य को महसूस किया और उन्होंने वर्षा देवताओं की भी पूजा की। यहाँ गीता हम सभी के द्वारा त्याग या निष्काम कर्म की आवश्यकता पर बल देते हैं। भारत जैसे कृषि समाज में यज्ञ का अर्थ खेती के लिए भूमि जोतना भी है और बीज को नियत मौसम में काटने के लिए बलिदान करना भी है। पथ पर प्रकाश कहता है, जीवन का गीत सुनो। डॉक्टर एनी बेजेंट अपनी टिप्पणी में कहते हैं, चीजों के पीछे की वास्तविकता को देखने के लिए जीवन के गीत को सुनना है। जीवन का गीत वह शक्ति है जो जीवन के नीचे हर समय दौड़ती रहती है। प्रकृति के सभी विभिन्न आंदोलनों में ध्वनि और रंग और उनकी अभिव्यक्ति और संगत के रूप में है। कुछ अन्य हैं जिनके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते हैं, लेकिन कम से कम ध्वनि और रंग हमारे अनुभव के भीतर है। प्रकृति के सामंजस्य के बारे में कुछ सुनना और उसकी सुंदरता और महिमा और व्यवस्था के बारे में कुछ देखना संभव है, और यह किसी भी अन्य की तुलना में इस तरह से अधिक है कि कोई भी पूरी तरह से निश्चित हो सकता है कि सभी चीजें एक साथ काम कर रही है। अच्छाई के लिए विकार और कुछ भी नहीं बल्कि थोड़ी सी गड़बड़ी है। सतह पर झाग है। समुद्र की वास्तविक गहराई तो नीचे है और यह पूरी तरह से दैवीय कानून का पालन करता है। ऋतम सत्यम परम ब्रह्म एक महान मंत्र है। ऋतम ब्रह्मा का स्वभाव है जो ब्रह्मांड उभारते हैं, विकसित होते हैं, अपने आवंटित कार्यों को पूरा करते हैं और विलीन हो जाते हैं। सद्भाव और संतुलन इस पूरी प्रक्रिया का आधार है। अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति श्री अल गोर द्वारा एक असुविधाजनक सत्य नामक एक अमेरिकी वृत्त चित्र का उल्लेख करना यहाँ पे मैं चाहूंगी। जैसे यह ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ लोगों को शिक्षित करने के उनके अभियान का एक हिस्सा था। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में अंतरराष्ट्रीय जन जागरूकता बढ़ाने और पर्यावरण आंदोलन को फिर से सक्रिय करने के लिए इस फिल्म को श्रेय दिया गया था। दुनिया अब सिंथेटिक कीटनाशकों के खतरे को समझ चुकी है। अमेरिकी सरकार ने कृषि उपयोगकर्ताओं के लिए DDT के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक में कीटनाशकों के अंधाधुंध उपयोग से होने वाले पर्यावरणीय नुकसान का दस्तावेजीकरण किया गया है। वास्तव में
कीटकनाशक शब्द भ्रष्ट है, क्योंकि यह परागण और भूमि की उर्वरता के लिए सभी जीवाणुओं, केंचुओं, तितलियों, मधुमक्खियों और अन्य उपयोगी कीड़ों को मारता है। अंबिका सुथन मंगत की एक मलयालम पुस्तक है। यह पुस्तक कासरगोड जिले के एनमाकाजे नामक गांव के लोगों के वास्तविक जीवन पर आधारित है। केरल का काजू के बागानों पर एंडोसल्फान कीटकनाशक के छिड़काव के कारण आनुवंशिक रूप से विकृत बच्चे पीड़ित हैं। इस पुस्तक ने कीटकनाशक पीड़ितों की दुर्दशा की और ध्यान आकर्षित किया। पेड़ों की कटाई के खिलाफ सुंदरलाल बहुगुणा का चिपको आंदोलन, मेधा पाटकर द्वारा नर्मदा बचाओ आंदोलन और डॉक्टर NV कृष्ण वरियर और सुगाथा कुमारी द्वारा साइलेंट वैली आंदोलन उल्लेखनीय है। केरल सरकार और केरल राज्य बिजली बोर्ड के एक बांध की स्थापना और बिजली की कुछ यूनिट पैदा करने के प्रस्ताव के खिलाफ डॉक्टर NV कृष्ण वरियर और पद्मश्री जानकी अम्मल, एक महान वनस्पति शास्त्र है, वह इस संघर्ष में सबसे आगे थे। सौभाग्य से जनता के विरोध के कारण केरल सरकार ने इस परियोजना को छोड़ दिया और अभी हमारे सामने एक सुंदर पारिस्थितिक पार्क है। हमें उन महान थियोसॉफिस्टों के नाम को कृतज्ञता पूर्वक याद करना होगा जो प्रकृति और पारिस्थिति की रक्षा के लिए खड़े थे। फ्रांसिस ब्रूनेल एक थियोसॉफिस्ट थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन प्रकृति और पर्यावरण के लिए समर्पित कर दिया था। वे प्रकृति, चित्रकार, मूर्तिकार, विज्ञान और दर्शन शास्त्र के महान प्रेमी थे। उन्होंने जीवन और प्रकृति के संरक्षण के लिए आंदोलन की स्थापना की और प्रकृति के वास्तविक राजदूत के रूप में सार्वभौमिक समझ और भाईचारे के लिए अभियान चलाया। चेन्नई के कला क्षेत्र की संस्थापक डॉक्टर रुक्मिणी देवी अरुंडेल ने न केवल एक महान थियोसॉफिस्ट और भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थी, बल्कि शाकाहार और पशु अधिकारों के एक मजबूत योद्धा थी। उन्होंने पशु अधिकारों का मुद्दा उठाया। 1953 में उन्होंने जानवरों के प्रति क्रूरता को रोकने के लिए संसद में एक निजी विधेयक भी पेश किया। उन्होंने 1956 में पर्यावरणीय खतरे और डॉलर हासिल करने के लिए मेंढक के पैरों के निर्यात में शामिल क्रूरता को उठाया। अंत में भारत सरकार ने मेंढक के पैरों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। मेंढक वास्तव में मनुष्य और खेत के लिए हानिकारक मच्छरों और अन्य कीड़ों को खाकर हमारी और किसानों की मदद कर रहे थे। वह विश्व शाकाहारी कांग्रेस की पहली अध्यक्षा भी थी। जिना राजा दास थियोसॉफिकल सोसाइटी के चौथे अध्यक्ष प्रकृति के महान प्रेमी थे। उन्होंने जिन देशों का दौरा किया वहां से विभिन्न पेड़ों के पौधे लाए और अड़ियार स्टेट में लगाए। अड़ियार स्टेट में हम जो पेड़ देख सकते हैं जैसे महगनी और बरगद, उनके समय में लगाए गए थे। थियोसॉफिस्ट हमेशा प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा के लिए खड़े रहे। 1989 के चक्रवात में जब ग्रेट बरगद का पेड़ उखड़ गया तो इसे फिर से ठीक करने के लिए विभिन्न संगठन आगे आए। विभिन्न समाचार पत्रों और पत्रिकाओं ने इस कार्रवाई की प्रशंसा की और संपादकीय लिखे। पशु अधिकारों भारत में और उसके आसपास थियोसॉफिस्टों के अग्रणी कार्य के कारण पशु अधिकारों की रक्षा की गई। केरल में थियोसॉफिस्टों के अभियान के कारण त्रावणकोर रियासत की रीजेंट रानी ने सरकार के स्वामित्व वाले विभिन्न मंदिरों में पशु बलि पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रकृति और पर्यावरण को नष्ट करके विशाल बांधों, रेलवे लाइनों आदि के निर्माण से विकास की धारणा को त्याग देना चाहिए। जंगलों की अंधाधुंध कटाई से भूस्खलन और अप्रत्याशित बाढ़ आती है, जो हमने कुछ साल पहले केरल में देखी थी। हमें अपनी झीलों, नदियों, बैकवाटरों और इसके समुद्री संसाधनों की रक्षा करनी है। भूमि खनन, नदियों से बालू निकालना वास्तविक खतरा है जिसका हम वर्तमान में सामना कर रहे हैं। वन्य जीवों के विनाश से प्रकृति का संतुलन बिगड़ेगा, क्योंकि जीवन का जाल
आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। पक्षी डोडो की कहानी भी हमारे सामने ही है। यह वही जीवन है जो पृथ्वी की धूल में घास की असंख्य टहनियों में आनंद से उड़ता है और पत्तों और फूलों की लहरदार लहरों में टूट भी जाता है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों वक्ताओं को। बहुत ही अभूतपूर्व और बहुत इम्पोर्टेंट विषय पर बड़े विस्तृत रूप से हर भाषा में न्याय किया गया। और मंजूषा जी विशेषकर, चूंकि हिंदी मुझे ज्यादा समझ में आती है, आपने बहुत ही सुंदर हर शब्द और हर भाव को दर्शाया है। अंतिम जो लाइनें हैं उसको भी बहुत सुंदरता से आपने वो किया। दिनाकरण जी, thank you so much for bringing such a brilliant subject. And Beena ji, thank you so much for another translation in sweet Malayalam. It's like a flowing river. Anyone who wants to ask any question or something, please come ahead. Or want to share something? Harshvardhan ji has already shared here that it was a very apt explanation about the importance of ecology. I understand that if we were always aware of it, we really live the spiritual life. And he goes on saying that when we never waste either food or water or electricity, we are all on the path of spiritual progress. Radhaji used to advise and instruct the delegates during international convention that to use water and electricity wisely. It was a small step of being aware to do so. I felt that it was a bigger step to be responsible and helpful. Dinakaran ji, you have always explained very effectively with richness in your language. I appreciate your effort and deeper study into the said subject. Anyone else? Jasmine ji has also written appreciation, and Firoza and Zinu Master has also said that it was an inspiring talk and excellent translation. Ashok Lokhande ji has said, Brother Dinakar, it was wonderful, and all other language translators and presentations. So these are the few things in the chat box. I don't think there is any question or something. Is there anything you want to say, Mr. Karappa? Yeah, please go ahead, unmute yourself, sir. Good evening to all of you, sir, brothers and sisters. Sir, Dinakaran brother, I want to know from you about the film you have told about nature and all these things. Will you please tell me the film name? In your talk, you mentioned about the film in YouTube. Achha, Okay. Film. An Inconvenient Truth An Inconvenient Truth. by Al Gore. Is it available on YouTube? Most probably it will be available. Okay. It's all about present day environment that is being destroyed by. Yeah. It is about global warming and all those. How the glaciers are melted and the water level is increased. It's a very beautiful presentation by the former Vice President of America, Al Gore. Okay, sir. You may recall that during last election, finally, after recounting, and that process went up to 2 months, and finally he declared that the other candidate has won, and I withdrew. That was an interesting election at that time. You may recall that. Al Gore and other, I think one other, remember who was his opponent, but Al Gore's name is in my mind. Thank you very much, brother. Thank you. Thank you, sir. Anyone else? I don't think there is anyone. Any of the speakers would like to share something else? Or we will go for the prayers. Ishwarji is here. Sir, one thing I like to share, sir. Would you please permit me? Yeah, please. Recently, I happened to go to Bawali for a study class. There I happened to see the influence of nature on human consciousness and all those things. Especially higher manasic plane
it has been influenced because of the heights in Uttarakhand. We find our mind is very calm and we are able to get very good thoughts because of that influence of the environment. That's why there is the presenter clearly shows that there is a need to protect our environment. At the same time, we have to take all the steps to see that global warming is brought to minimum. So thank you very much, sir. That's what I have felt about it. Thank you. Thank you. सरल जी नमस्कार. नमस्कार. 1 मिनट में लेना चाहूंगी. पहले तो दीनाकरण जी को बहुत बहुत आभार और कृतज्ञता कि उन्होंने इतना रिसर्च ओरिएंटेड अपना प्रेजेंटेशन किया और जो नेचुरल इक्विलिब्रियम है और जो मैन मेड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं दोनों के संबंध में विस्तार से बताया. तो बस एक शेर से अपनी बात समाप्त करूंगी और उसका ट्रांसलेशन भी बताऊंगी इंग्लिश में कि जिंदगी क्या है, अनासिर का ज़हूरे तरतीब, मौत क्या है, इन्हीं अज्जा का परीशा होना. व्हाट इज लाइफ? Life is systematically organization of 5 elements, and disintegration of this 5 elements is death. So, जिंदगी क्या है? अनासिर का ज़हूरे तरतीब. मौत क्या है? इन्हीं अज्जा का परीशा होना. Life is the systematically organization of 5 elements, and death is the disintegration of these 5 elements. और ये सेंटेंस उन्होंने कहा we are environment. बिल्कुल सही है. 5 तत्व जब तक हमारे शरीर में बैलेंस रहते हैं, उनका इक्विलिब्रियम रहता है, तभी तक हम जिंदा हैं. और इस सृष्टि में भी जब 5 एलिमेंट इक्विलिब्रियम में रहते हैं, तभी ये सृष्टि है. बहुत जोड़ना घटाना कहना तो थोड़ा बहुत आसान है, लेकिन बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत रिसर्च ओरिएंटेड प्रस्तुति की. बहुत बहुत आभार. बहुत बहुत आभार. Thank you, Sushma ji. I would like to thank all the translators, organizers of the Triveni meet. As I told before, this is a holy dip in the 3 wonderful languages, English, Hindi and Malayalam. In Kerala, we have that 3 language formula. That's why we are able to follow the Hindi also. In this context, I would like to remind you that Dakshin Par, the Hindi Prajar Sabha, was started by Dr. Annie Besant, the cooperation of Mahalmaji, and she allowed the office to be there is the Gogole Hall at Chennai. So we are indebted to for this 3 language formula which our late Munshi ji is continuing. Thank you, Munshi ji. Thank you. I never knew that this was tried earlier also. Thank you for the history. It motivated me. अशोक जी आप आ गए हैं, हर्षवर्धन जी आ गए. आपके अंतिम वाक्यों से समापन की ओर चलते हैं. अशोक जी पहले कहिए. हाँ, हेलो सरल जी. आज का जो दिनकरन जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारे जो अगल बगल के पंचमहाभूत है, जिसको हम जिनकी कद्र करना हमारे जहन से विस्मृत होते जा रही है, जिसके सारे पर्यावरण के जो दूषित परिणाम हैं, उसका वो कारण है. आज फिर से उन्होंने जागृति दी है, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ. और मलयालम तो नहीं समझ सका, लेकिन हिंदी में जो ट्रांसलेशन मंजूषा जी ने की है वो हमारे महाराष्ट्र फेडरेशन की बहुत अच्छे से और अप्रोप्रिएट उन्होंने उसका ये किया, और प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा है. और ऐसे विषयों के लिए मैं ऑर्गेनाइजर तरल जी और टीम का भी धन्यवाद करता हूँ. बहुत अच्छा. थैंक यू. बहुत बहुत अशोक जी, आपके शब्दों से तो मोटिवेशन मिलता ही है. और मंजूषा जी से मैंने शायद ये जहाँ पढ़ाती होंगी वहाँ इन्हीं लोग यूं ही सुनते होंगे, क्योंकि इतने अच्छे सरल तरीके से ये वाक्यों का निर्माण करती है कि वो रच बस जाता है मन में. हर्षवर्धन जी आपके अंतिम प्रवचन होते हैं हमेशा, बोलिए. Yes, I must add to this particular lecture. Dinakaran ji, I congratulate and also I appreciate. You gave me a chance to recollect those days in 98 when I attended the last convention there. In 98, it was not the last convention, but afterwards also I attended. But in 98, one film was shown that was about ecology and the global warming.
So that was the awareness which was created during that time, and that particular documentary created a kind of thing among the people at large, especially theosophists, those who were there, present there, and they also found that it was really very important for us to save our environment. Then what happened after returning to Ahmedabad, I just had some seminars with the students and the teachers. And we found out the ways and means to save electricity, to save water, and to save food. And we told the students to nurture the habits, how to save food in the home and in the restaurants and hotels, and how to save electricity by switching off those fans and electricity in our home, in the school, or wherever we are, and how to save water. So during that time, certain students also just asked me, sir, is it our duty? Should we do that? So I think that at that time, the questions were raised during that time, and it created really a kind of tremendous effect on the students, that they would do it very nicely, and they would start it from their houses without giving any advice. So the next week, they came with the report that their parents were highly pleased. They found that there was a change among the children, those who followed, those who tried to save food. Mummy, नहीं मुझे इतना ही चाहिए, I don't want more. मैं इतना that means जो मेरे breakfast में है, whatever it is there, I will eat, and then I will save it also. You don't give me more. So this kind of approach that was nurtured. Even in the classrooms also, when the recess time was there, they used to switch off the fans. They used to switch off the lights. So really, it is a nice thing. And what I mean, suppose if we do very small kind of act of saving water or electricity or food, it is the real theosophic approach. This is my understanding. So if you feel something very special, you can just put the remark, and I will be very happy in that way. Thank you very much. Thank you, sir. अर्चना जी, आपने अपना हाथ ऊंचा किया था. थैंक यू दिनाकरण जी, बहुत ही आई ओपनर रहा. मगर खाली मेरा प्रश्न ये है कि आपने वो बीच कहा था कि वो किताब हिंदी में भी ट्रांसलेट हुई है, वो जो अलग गई आपने जो बताई ना. It's a book by N. Magaje. N. Magaje is the name of a village. N. Magaje. It is in Kasaragod, northernmost district of Kerala. Northernmost district. So it's they have 5 to 6 languages in that particular district. For example, some people speak Kannada, some people speak Tulu, some speak Malayalam, and then that regional language, Arabic, Urdu, and all that. So this Enmagaji, I don't know the origin of that term, but it's the name of a village. So has it been translated in Hindi? You said, right? Yeah. So is it available? पढ़ सकते हैं हम? कहीं से मिल सकती है? I think that book was published during the centenary of Dakshin Bharat Hindi Prajar Sabha in 2013. Because Dakshin 13 or 30, I think, because Dakshin Bharat Prajar Sabha was started in Chennai. I think you are staying in Chennai. You can Mumbai. Okay, I can find out from Chennai. Yeah, we'll find out. We'll ask today he's not there, but we'll ask from Adia. तरल जी, आपका ये ब्रोशर है वो बहुत इफेक्टिव है, और हर ब्रोशर में हर बार कहना भूल जाती हूँ कि इतना इनोवेटिव आइडिया रहता है, इतना पिक्टोग्राफिक जब प्रेजेंटेशन रहता है. आईके तैमली ने भी कहा था कि जब आप कोई प्रेजेंटेशन करें और उसके साथ पिक्टोग्राफिक जो है प्रेजेंटेशन हो, तो वो विषय आधा तो विषय समझने में आसानी हो जाती है. तो कॉन्ग्रेचुलेशन so much for your innovative ideas and for your brochure all the time. Thank you, Sushma ji. Thank you. Taral ji, let me add to one thing. I must congratulate Manjusha WANKHED ji and Dr. T D BEENA. Both were very nice in that way.
And Dinakaran ji, you were just in the classroom of the college students where you used to speak like a professor and really you penetrated the subject very nicely. और आपका जो मलयालम जो है ना वो इतना समझ में आ रहा था because that was based on some certain words which are from Sanskrit language. और तो हमें वो उसमें समझने में तो आसानी रहती है. It is not the proper way that I can say that I can understand everything. लेकिन हिंदी तो बहुत बढ़िया आपने बताया, काफी अच्छी तरह से हिंदी में आपने बताया. Congratulations for that. Thank you. Yes. Thank you. I am only a student of theosophy and a student of ecology. Yes. This is a very vast subject. Very vast subject. Yes. Which cannot be confined to 1 hour or 2 hours. No, so no, everybody should make. You always bring subjects in parts, and I think 4 or 5 points combined together will complete something as a whole. So I think it is already 8:10. I will invite Keshwarji to please come and say the prayers. Shall I? जी केशव, अतुल जी डिस्कनेक्ट हो गए हैं तो मैंने ओके. मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहं न कर्णं न जीवा न च घ्राणनेत्रे न च व्योम भूमिर् न तेजो न वायुः चिदानंद रूप शिवोऽहं 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 चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं न च प्राण संज्ञो न वै पंचवायु न वा सप्त धातुर्न वा पंचकोशः न वा पाणिपादौ न चौपस्थपायुः चिदानंद रूप शिवोऽहं 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 चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं न मे द्वेष रागौ न मे लोभ मोहौ मदो नैव मे नैव मत्सर्य भावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानंद रूप शिवोऽहं 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 चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मंत्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञ अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्तः चिदानंद रूप शिवोऽहं 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 चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं न मृत्युर्न शंका न मे जाति भेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्मः न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानंद रूप शिवोऽहं 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 शिवोऽहं
चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुत्वा च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न वा संगतं नैव मुक्तिर्न मेयः चिदानंद रूप शिवोहम 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 चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। थैंक यू सो मच केशवर जी, बहुत बहुत धन्यवाद और सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर